This module is about the cash flows from financing activities, and this is the second part of our discussion. In the first part of our discussion, we talked about the cash inflows and outflows, which are to be considered in the third portion of a cash flow statement, that is cash flows from financing activity. हमने ये बात की थी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से मुराद वो एक्टिविटीज हैं कि जहां पर हम फाइनेंसिंग लेते वक्त या फाइनेंसिंग लौटाते वक्त कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को कंसिडर करते हैं. जब भी कोई कंपनी, कोई बिजनेस फाइनेंसिंग अरेंज करता है, यानी वो शेयर्स इशू करने के जरिए से हो या लोन लेने या बॉन्ड्स इशू करने के जरिए से हो, तो उससे कैश इनफ्लो होती है. और जब भी कोई कंपनी कोई फाइनेंसिंग लौटाती है, दैट इज बाय रिटर्निंग अ लोन और रिटायरिंग अ बॉन्ड्स और प्रेफर्ड स्टॉक्स, दिस इज व्हाट इज द कैश आउटफ्लो. तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर हमारे पास कैश इनफ्लोज भी होते हैं और कैश आउटफ्लोज भी होते हैं. पिछले मॉड्यूल में हमने डिटेल से इसको डिस्कस किया था कि किस एक्टिविटी से कैश इनफ्लो और किस एक्टिविटी से कैश आउटफ्लो हो सकता है. इस मॉड्यूल में हम एक एग्जाम्पल को लेके ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज से या कौन कौन सी ट्रांजैक्शन से हमारा कैश इनफ्लो होता है और उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर शो करने की ज़रूरत होती है, और कौन कौन सी एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शंस हैं जिससे कैश आउटफ्लो होता है और उसे हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शो करना होता है. Let's have a look at this example where the first one is long-term borrowing of 40,000 rupees. यानी अगर बिजनेस 40,000 रुपीज का लोन ले ले, डेट ले ले, तो इससे कैश इनफ्लो जनरेट होगी. The second point is about payment of a long-term debt, which is of 30,000 rupees. तो जब भी कोई डेट या कोई लोन या कोई फाइनेंसिंग रीपे की जाएगी, so from the company's or the business's perspective, it will be a cash outflow. So this 30,000 will be taken as an amount of cash outflow. Then there is short-term borrowing, यानी business में company ने 15,000 की मजीद short-term borrowing की. So this short-term borrowing will again be a source or an inflow of cash. Issuing bonds. The term issuing bond means selling the bonds to the general public and getting cash from them. तो जब भी bonds issue किए जाते हैं, उसके नतीजे में कैश इनफ्लो होती है. और retirement of bond is actually repaying to the investors the amount they invested in the company by purchasing bonds. तो जब हम bonds issue करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास कैश इनफ्लो होती है, और जब बॉन्ड्स अपनी मैच्योरिटी को पहुंच जाते हैं और बॉन्ड होल्डर्स को उनका पैसा वापस करके उनसे बॉन्ड ले लिए जाते हैं, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ बॉन्ड्स, एंड दिस रिजल्ट्स इनटू अ कैश आउटफ्लो. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो एन आउटफ्लो, बट वी विल सी वेदर इट शुड बी टेकन इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और नॉट. इशू ऑफ कॉमन शेयर्स, issue of preferred shares, both are cash inflow. Purchase of treasury stock. हम पिछले मॉड्यूल में ये डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेजरी स्टॉक से मुराद वो शेयर्स हैं जो कि कंपनी अपने ही शेयर्स को मार्केट से खुद ही खरीद लेती है. So these shares are not cancelled, but they remain as issued, subscribed and paid up shares. लेकिन ये शेयर आम इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स के पास नहीं होते, बल्कि ये कंपनी की अपनी मिल्कियत में आ जाते हैं और उस वक्त तक कंपनी के पास रहते हैं जब तक कि वो इसको दोबारा जनरल पब्लिक में सेल ना कर दे. सो दिस इज एन अमाउंट विच रिड्यूसेस द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स. यानी ट्रेजरी स्टॉक को हम आउटस्टैंडिंग शेयर्स के नंबर में से रिड्यूस कर देते हैं. लेकिन जब भी एक कंपनी ट्रेजरी स्टॉक खरीदती है तो उससे कैश आउटफ्लो होती है, और जब ट्रेजरी स्टॉक को वापस सेल करती है तो उससे
इनफ्लो होती है। डिविडेंड की पेमेंट इज एन आउटफ्लो ऑफ cash, and profit earned by a company may or may not be equal to the amount of cash inflow, but we also have to see whether it should be taken in the financing activities or not. Now, with the help of all these values which are given here in this example, let's see what will be the net amount of inflow or outflow under the head of financing activity. So let's have a look at the calculations of cash inflows and outflows that we have just considered in the data sheet. So in this example, the first one is long-term borrowing, where we have borrowed a sum of 40,000 and that is shown as an inflow of cash. Payment of long-term debt, यानी हमने long-term debt लौटा दिया, so that returning of debt results into an outflow, और इसीलिए हमने 30,000 को brackets के अंदर लिखा है, which is indicating that it is an outflow. The third value of 15,000 is short-term borrowing. बिजनेस ने शॉर्ट टर्म लोन लिया और शॉर्ट टर्म लोन लेने से कैश इनफ्लो हुआ, जिसको हमने एज एन इनफ्लो रिकॉर्ड किया. इशूइंग अ बॉन्ड्स और retiring of bonds is about an inflow and outflow. Whenever a company issues bonds, that results into an inflow. ये एक लोन लेने की तरह की चीज है. So issue of bonds is shown as an inflow of 35,000 and retirement of bonds is returning the money of the bondholders to them, which has resulted into an outflow of 4,500. Payment of interest is not taken here क्योंकि interest की payment को हम operating activities के head के अंदर consider करते हैं. Issue of common shares has resulted into a cash inflow, so it is taken as 20,000 rupees inflow. And purchase of treasury stock requires an outflow, which is shown as a 5,000 outflow. And the payment of dividend, which is 10,000 rupees, is also an outflow. जब भी dividend pay किया जाएगा, उससे हमेशा outflow होगी. And the last account, which was profit earned, you can see that it is not accounted for. It is not taken in these financing activities because profit is something that is taken in the operating activities. So by adding all the cash inflows, which is 40, 15, 35, and 20, and subtracting out of the total the cash outflows, which are 30, 4,500, 5, and 10,000, we get the net value of cash inflow. यानी इन तमाम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के नतीजे में हमारे पास 60,500 की नेट कैश इनफ्लो हुई.